What is exactly CDAC? Average package student get? क्या नॉन आईटी वालों को अभी भी जॉब मिलती है? ये कितने मिनिमम कॉल्स जो होते हैं जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं, बोथ आईटी नॉन आईटी irrespective? What happened in exactly 6 months of CDAC? So is there a guarantee placement CDAC offer? So CDAC provide a free 6-month course which nobody knows. Do online CDAC program have same value or placement opportunity as offline program? Can students with backlog, gap year or below 60% marks still join CDAC and get placed? If a student fail in internal exam या फिर CCAT exam, so is there per placement journey over? Scholarship available है? Is there a loan facility available? Is CDAC Worth in 2026? So क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है। आज का वीडियो का टॉपिक का नाम है एवरीथिंग अबाउट CDAC। वैसे CDAC के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए बट ये स्पेशल है क्योंकि आज हम डॉक्टर CP जॉनसन सर के साथ हैं, हु इज़ अ सीनियर डायरेक्टर एट CDAC, और आज हम अपने CDAC के सारे डाउट ऑफिशियली सर से पूछेंगे कि भाई इसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है। हम इसको प्रॉपर फ्लो में लेके जाएंगे, एलिजिबिलिटी से लेके सेंटर बोल दो, कोर्स सिलेक्शन हो गए, CDAC में एक्चुअली क्या होता है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, फीस में स्कॉलरशिप है कि नहीं, वो सब चीज़ हम बात करेंगे। सो वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन जॉनसन सर। Thank you so much, Sumar, and it's a privilege to be on your channel. I've been watching your channel for maybe many years now, and we get a lot of information. And thank you for providing information about CDAC through your channel to the prospective students. थैंक यू फॉर रनिंग द CDAC। एंड हियर कम्स माय फर्स्ट क्वेश्चन सर, कि अगर आप बेसिक भाषा में बताओ, व्हाट इज एग्जैक्टली CDAC? CDAC is a Government of India organization under the Ministry of Electronics and IT. Okay. It was established in 1988, and we started with the supercomputer, the first supercomputer Param, and then we expanded it into various other aspects like software development. Now we are into almost everything in high-end technologies, advanced technologies that is there, like artificial intelligence, cyber security, quantum computing, semiconductors, everything. We are there in all these things. So through this, we have developed our expertise. Okay. And through that research, we thought that why can't we impart this knowledge to the public, right? Okay. To the prospective engineering graduates, MCAs and MSCs. So we designed our courses, the 6 months programs we started way back in 1993. We established our advanced computing training school. Then like it is almost 32 years we have completed our training programs. So we started off with our first program, it's our flagship program, that is PG Diploma in Advanced Computing, DAC. That time it was DAC, and then we started one after the other. So we are around 15 courses we launched. That's going on. In every aspect of IT and electronic side, we have courses. कितने सेंटर्स है CDAC के सर? CDAC has its own 12 centers are there, north to south, east to west, and central India, everywhere we have centers are there. And we also have the courses are run through our PG diploma courses are run through our affiliated centers. Okay. Affiliated centers, you can see that if CDAC is a university, affiliated centers are our private colleges. Okay. Right? So Sunbeam, Vita Mumbai, these are affiliates of CDAC. Affiliated, authorized training centers. So we actually the course is designed by CDAC, like the way university does that. So we have an academic council which decides, and we design the courses, and the same course is run by CDAC as well as the authorized training centers. And its delivery is monitored by us. The quality is monitored by us, the contents and the exams are conducted by us, and even the placements are coordinated by us. Okay. So there is no difference as such. We are doing a course from CDAC center or an authorized training center. So now the first thing I just want to ask is eligibility criteria. Okay. सबसे पहला एक बेसिक एलिजिबिलिटी तो है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका अगर एवरेज 55-60% के अबाव है तो दे कैन डू IT नॉट। पर बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछते हैं कि क्या BSc या फिर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर कोई BCA या डिप्लोमा स्टूडेंट CDAC कर सकते हैं? BSc alone cannot, they cannot do it. BCom or basic 3-year degrees, they are not eligible for not it. eligible. Yeah. So if you are a BSc, you have to do an MSc. Okay. Or BCA, they have to do MCA. Okay. So MSc, MCA are also eligible for our programs. Okay. Okay, and then engineering graduates. Engineering graduates, there are certain courses in which only the CS, IT, electronics, these kind of core fields are only eligible.
Okay. But there are courses like DAC course, Hmm. okay, and that is, they have been renamed now, but I would still call for, people know them more as DAC. So DAC course or AI course, big data analytics, cyber forensics, all these have like any graduate, engineering graduates can take up these courses. Okay. Right? And the percentage you are asking, right? Yeah. So all the courses except the AI course need 55% only. You need to have 55%. Okay. Now AI, the candidate needs to have 60% in their engineering. Does final year students can apply for CDAC? Final year students can apply, but provided they have appeared for all the exams. Okay. They have completed all their exams. So 2026 final year students cannot apply because they wouldn't have appeared the 8th semester, right? Okay. Yeah. So 2025 for this batch. 2026 students can apply for the next batch, which is going to start in August 2026. Our current batch is going to start in February 2026. फेब वाला नहीं अप्लाई कर सकते फाइनल ईयर, अगस्त वाला कर सकते हैं. अगस्त वाला कर सकते हैं, राइट. एलिजिबिलिटी का मेरा जो अगला क्वेश्चन था कि एक चलो CS IT वाले जो बच्चे हैं वो तो उनको तो पता है कि ठीक है CDAC 6 महीने का कोर्स है, मेरा होता है. बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो नॉन IT से हैं, उनको लगता है कि CDAC यार मेरे लिए सही होगा कि नहीं, क्योंकि मैं IT से नहीं हूँ, तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो क्या मैं कोप अप कर पाऊंगा, मेरे लिए कितना इजी होगा वो या कितना डिफिकल्ट होगा, तो उनको क्या आप बताना चाहते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं. हम लोग जो Q&A करते हैं उसमें भी बहुत सारा ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं. व्हेन वी डिजाइन ए कोर्स एंड हम लोग बोलते हैं कि ये सब लोग एलिजिबल है, सब बोला तो ये स्टूडेंट्स कर सकता है, राइट? ये कर सकता है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर सकता है. एंड मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैं अभी जो February 2026 बैच है, दैट इज़ माई 28th बैच. या तो इसका मैं एडमिशन्स देखते हैं, रनिंग ऑफ द कोर्स देखते हैं, एक्सिट में ये सब एग्जाम्स, प्लेसमेंट्स, ये सारा चीज़ का जो वी हैव एन एकेडमिक मैनेजमेंट कमिटी जो एकेडमिक मैनेजमेंट देखते हैं, तो कोर्स जैसे डिलीवरी देखते हैं, सब कुछ उसके बारे में देखते हैं. आई एम द चेयरमैन ऑफ इट ऑल इंडिया, राइट? सो इसमें मैं बताता हूँ, लाइक वी हैड मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड एंड वी हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, and with their sheer determination and persistence and passion, they have excelled in the course. जैसा कि they have done so well that they have become the topper in the class, and जिस बैचेस का टॉप पैकेजेस है, they have got it. मैंने भी बहुत लोगों को मिला, तो उन लोग जितनों पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो आप अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो उनका था कि भाई मैं IT से नहीं था, पर मैंने CDAC किया और मेरा हो गया. सो एक नॉन IT के लिए करियर स्विचर बहुत अच्छा होता है CDAC. मैंने बहुत लोगों से बात. What about gap years? Gap also, that's also a very important thing. Gap जो है, that you see, what matters during CDAC is that how much you prepare during that 6 months. Okay. उस 6 months में कितना prepare करेगा, that is most important thing. And with all this preparation, how well you perform during the interviews, during the campus placement process, that is only what matters. अभी तो बाकी जो है गैप तो हमको कम भी नहीं कर सकता. अभी जितना गैप था वो आगे वेट करेगा तो बढ़ता ही रहेगा. बट आई हैव सीन, एज आई सेड, इन मेनी बैचेस देयर आर स्टूडेंट्स विद 10-year गैप. They are coming, some are like, they were physics MSc they had done 10-12 years back, and they have come here, and one girl who was a topper here, and she got into the first week itself the job for that. Wow. Civil engineers who had come with, so उनका तो branch का भी problem है, gap का भी problem है, दो problem है, but they were the toppers. And many good companies, especially those who are paying high packages, they don't look for all these kind of things. Many of them, okay, so they come for open to all, but many actually see also that gap year भी देखता है, branch भी देखता है, ऐसा भी है. but you will get good opportunities if you are really good. तो क्या करने का, जो भी candidates है अभी जो admission सोच रहे हैं, कल से prepare करते रहो, not for just for the CCAT, with the final dream is getting placed, right? Exactly. तो वो जो मन में रख के जो है अभी ज्वाइन करने वाले हैं फरवरी में, they will have this placements in August. August दिमाग में रख के अपनी तैयारी अभी से ही शुरू करनी. कोई एज लिमिट है CCAT की? एज लिमिट CCAT का ऐसा
CCAT का तो नहीं है, CDAC का भी नहीं है, एडमिशन लेने के लिए भी नहीं है. Okay. So we had students who once we had one student in CDAC Kharga who was 65-year-old. He had come and took that because he just wanted to upgrade. Some cases like that, not for placements, right? बट एज का भी थोड़ा प्लेसमेंट में थोड़ा इफेक्ट होता है. तो इसके लिए उसका एक ही रेमेडी है, जैसा कि आप बोलते हैं तगड़ा प्रिपरेशन. सो तगड़ा प्रिपरेशन करो ड्यूरिंग द कोर्स एंड यू कैन रियली डू, दे विल बी एबल टू डू रियली वेल. सपोज सर किसी ने डिसाइड किया कि हाँ यार CDAC मेरे लिए सही है, मैं जाना चाहता हूँ, पर उसके लिए एक एग्जामिनेशन होती है CCAT. उसके लिए अगर मैं जॉनसन सर को पूछूं, आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, आप बच्चों का देखते हो कौन आता है, व्हाट ऑल दे शुड डू फॉर एन IT बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, और अगर नॉन IT वाला बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, कितना महीना उसको प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए टू स्कोर ए गुड रैंक एंड गेट अ गुड इंस्टीट्यूट. करेक्ट. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है CCAT एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने वाला है January 10th and 11th को, Saturday and Sunday we'll be having it at multiple test centers. So candidates have to go to these centers and give the exam. It is an online, this computer based exam. They have to give there, but they have to go to the nearest test center. काफ़ी जगह पे है, around 30 plus centers में across India we are conducting it. Okay, so this exam is of 3 sections are there, section A, B and C. So section A and B are compulsory for everybody. Now it is. Yeah, compulsory for everybody. And section C is for electronic based students. VLSI embedded. Exactly. तो उनके लिए है. तो इसमें अगर देखा जाएगा तो जो आप पूछ रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा सेक्शन है, आई वुड से सेक्शन ए. क्योंकि सेक्शन ए में क्या होता है कि सेक्शन ए क्लियर होना जरूरी रहता है. Right, and उसमें you should not be in the lowest 10%. If you are in the lowest 10% of all the candidate, you will be disqualified. Okay. जैसा कि एग्जाम्पल बताता हूँ, 10,000 कैंडिडेट्स अगर अपियर कर रहा है तो लोवेस्ट 1000 लोगों को निकाल देंगे, तो बाकी 9000 लोगों को रैंक देते हैं. ठीक है. या सो देन दैट वन, एंड देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्लियर होना बहुत जरूरी है. एंड उसमें हर एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. हर एक मार्क में every correct answer gives you 3 marks and it has a negative mark. So every wrong answer will give -1 mark. तो हर एक इसमें जैसा है कि 4 मार्क का डिफरेंस आता है अगर गलत है या करेक्ट है, तो उसमें क्या बहुत सारा रैंक ऊपर नीचे जाता है. राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दैट सेक्शन ए में मार्क मिलना. वो क्लियर हो गया, देन सेक्शन बी भी सबके लिए कंपलसरी है. सो दे हैव टू गिव सेक्शन बी ऑल्सो. सो टुगेदर ए एंड बी का जो साथ में है, वी क्रिएट दी रैंक फॉर कैटेगरी 2 बोलते हैं इसको. रैंक होता है हमारा 12 कोर्सेज वी आर ऑफरिंग. 12 कोर्सेज है. जो कोर्सेज के बारे में बोल रहा तो PG DAC, ऑल द कोर्सेज आर नाउ नोन एज पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम. Advanced computing, AI, big data analytics, and cyber security, robotics. Many 12 subjects are there in that. So embedded systems, IT infrastructure, all these are there. So all these courses, out of that 10 courses are with category 2. 2 कोर्स है इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, जो आप बताया है, एम्बेडेड और VLSI है. तो उसके लिए सेक्शन C देना पड़ता है. उसमें भी यू हैव टू गेट गुड मार्क टू गेट गुड रैंक. अभी एक क्वेश्चन पूछे तो रैंक का क्या इम्पोर्टेंस है? राइट. वो अपन अगले जो है, चलो एक बार अपने को प्रिपरेशन समझ में आ गई. मैंने भी जो थोड़ा फीडबैक था वहाँ पे, जो नॉन IT के बच्चे थे ना, उन्होंने मुझे बोला कि यार देख, कॉम्स में कोडिंग में हम उतने नहीं है, तो अगर हम एप्टीट्यूड तगड़ा करते हैं और थोड़ा बहुत भी ये कर लेते हैं तो अब अच्छा रैंक ला सकते हो. वो नॉन IT ये मैं समझा कि चलो CCAT प्रिपरेशन भी मैं समझ गया, एग्जाम मैंने क्रैक कर ली, और अब आ रहे हैं रैंक्स. तो 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक सही कोर्स सिलेक्ट करना होता है, एक सही सेंटर सिलेक्ट करना होता है. तो मैं सबसे पहले कोर्स पे आ जाता हूँ, और इसी में मैं पूछता हूँ कि ये कोर्स के नेम चेंज हुए हैं पहले, तो उसका क्या फंडा है. दूसरा, विच आर द टॉप 5 कोर्सेज विच आर मोस्टली टेकन, जो बच्चे लेते हैं कि भाई है. क्योंकि जो कोर्सेज में आता है, अगर आप मासली लोगों को पूछो अरे डैक कर ले, पर देयर आर अदर कोर्सेज आल्सो, जैसे DBDA है, AI है, 12 कोर्सेज आर देयर. तो बाकी कोर्सेज के बारे में लोगों को इतना पता नहीं. एंड विच आर द टॉप 5 मोस्ट कोर्सेज जो लोग ज्यादा करके चूज करते हैं कोर्स सिलेक्शन में. विच आर द टॉप 5 कोर्सेज हु पीपल चूज और स्टूडेंट्स चूज. ओके, तो पहले क्वेश्चन है उसका नाम चेंज हुआ है. ओके, सो डिप्लोमा जो वर्ड है, डिप्लोमा वर्ड का हमने रिप्लेस करके सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है.
Okay. So postgraduate diploma in advanced computing is known as postgraduate certificate program in advanced computing. So Okay. PG DAC जो था, it will be known as PGCP is common, and AC, PGCP AC, PGCP AI, advanced artificial intelligence, like that. Why it is, as you asked, why it was changed, right? So this is like, this is an advantage for the students. Okay. We are getting the approval from NCVT, that is the National Council for Vocational Education and Training. Okay, it's a national body. तो उसका accreditation मिलेगा, courses will be approved by it. So once it is value और बढ़ जाएगा, of course. And उसका जो objective है, it is vocational education के लिए. Vocational education means आपको जो है job oriented courses के लिए. Okay. So that's all plus things for the student point of view. It is top 5 courses. Courses are like, currently we have 12 courses are there. All the details are there on our website, acts.cdac.in. उसमें गया तो you will get all the details. Okay. तो उसमें top 5 courses अगर पूछा जाएगा तो जो जैसा है कि all courses are good and they have industry requirements are there. कुछ courses है ज़्यादा centers में offer कर रहा है, तो that is सबसे ज़्यादा जो है advanced computing courses है, उसका requirement DAC जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अपना flagship program कह सकता है. तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, मे बी अराउंड 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन इन दैट. उसका रिक्वायरमेंट भी उतना ज़्यादा होता है, कंपनीज बहुत ज़्यादा आता है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है तो कंपनीज भी ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग नया मोर एंड मोर सेंटर में ये कोर्स चला रहे हैं ना. तो है उसका बाद में देखा जाएगा तो जो नंबर ऑफ सीट्स अगर देखा जाएगा तो डाटा एनालिटिक्स को है, बिग डाटा एनालिटिक्स का कोर्स DBDA जो बोलते थे पहले, तो अभी PGCP BDA कर बुलाते हैं. Then we have embedded systems है, ITISS करके जो कोर्स है, डिक्टिस जो बुलाते थे उसको है. And then AI courses, the AI course is very much in demand. So we have few of the centers like CDAC Kharghar, CDAC Delhi and CDAC Patna. We are starting this course in addition to the existing one in Noida, Pune and Guwahati. We are starting this one because the AI demand is there more. मतलब companies खुद AI के बच्चों को company भी है, and there are a lot of many government initiatives are there. अभी जैसा है कि सर्वम AI बोलते हैं, जैसा है कि AI for all. So all these kind of, there are a lot of thrust for all these technologies. Not only that, we have things for robotics courses there, blockchain technologies. So blockchain is offered only at one center in Patna, robotics is only in Kolkata, and cyber forensics done only in Trivandrum. Like one center में offer करने वाला course. कुछ courses के बारे में बच्चे जानना चाहते हैं पर इतना जान नहीं पाते, तो is there any go to place, जैसे कोई cyber security के course के बारे में जानना है, so student ask me and even मतलब मेरे को कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा DAC पता है, DBDA पता है, DICS पता है, AI पता है, ये 4 तो सही है. But people don't have idea about cyber security and those courses, तो उसके लिए कैसे पता करें सर? इसका जो है ना, आपको सबसे ज़्यादा पता होगा कौन सा कोर्स के बारे में, DAC के बारे में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जगह पे चलता है. जैसा कि मैंने बोला कि अराउंड 25 सेंटर्स में ये चला रहा है, so सब लोगों को पता है, जिसके वो किया वाला लोग भी ज़्यादा है. इसलिए कोर्सेज लाइक आप जो पूछ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, DCS बोलते थे उसको, दैट कोर्स इज रन एट ट्रिवेंड्रम इन ऑनलाइन मोड. ये कोर्स भी बहुत अच्छा है, ठीक. उसका इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए तो आपको उनको ट्रिवेंड्रम में कॉल करेगा तो यू विल गेट मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट इट, व्हाट इज द प्लेसमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स. इट इज रनिंग फॉर few बैचेस रनिंग. सो कोई कोर्सेज के बारे में जानना है तो हमारी बुकलेट में देखने है कि वो कौन से सेंटर में अवेलेबल है उसका, और उनके रिगार्डिंग उनसे कनेक्ट करना. राइट. उसका जो एंड पे दिस इज दिस वन एडमिशन बुकलेट, यू कैन गो द लास्ट पेजेस में उसका कॉन्टैक्ट अस में लिखा है, तो यू कैन गो देयर एंड कनेक्ट विद देम, सो दे विल बेसिकली गिव ऑल द इंफॉर्मेशन. राइट. एक बार नहीं 2-3 बार ट्राई करो, अगर एक बार नहीं मिला तो ठीक है. बहुत सारा कैंडिडेट्स बुला रहा होगा. ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना फर्क है? क्योंकि देखो ऑफलाइन एक एनवायरनमेंट होता है सर, सब पढ़ रहे हैं. ऑनलाइन तो यार मतलब, तो आप कैसे उसको ट्रैक करते हो उन स्टूडेंट्स को, कैसे उनको भी डिसिप्लिन पे रखने की अपने को पूरी कोशिश रहती है. सो हाउ यू डू दैट? सी देयर आर केसेस लाइक ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अटेंशन हम लोग को स्टूडेंट्स के ऊपर देना पड़ता है, ऑब्वियसली. राइट. तो जैसा है कि हम लोग जो फिजिकल क्लासेस में है, क्लास में जाओ, ऐसा है कि आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ CDAC Kharghar itself. Okay, we have physical students as well as online students are there. Physical students are there, we go to the class, all are attentive and sitting over there. Online classes we have to make sure that they are attentive.
Okay. right? And we have to put a lot of effort in that. And what we do is that we also involve their parents also in this journey. Okay. Right? So make sure that they are also part of it, and make sure that the students are sitting and studying and all. तो इसमें ना सुमेर एक चीज़ रहता है कि students don't listen to the center or institute if they do not have that clear cut vision. Okay. तो हम लोग जैसा है कि इनको जैसा है कि whether it is online or offline, हम लोगों को एक विशन देता है, जैसा है कि हम लोगों को जैसा है कि you heard about the power of manifestation, right? इसका एक एक्सरसाइज करवाते हैं शुरू से. वो बोलता है कि this is what you are going to achieve. Now whether you are monitored by somebody right there or not, your target is same. मैंने सर फीडबैक सुने अच्छे कि भाई ऑनलाइन में भी अच्छा कराते हैं, आप समझ रहे हो, ये चीज़ है. प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि अरे ऑनलाइन वाला बच्चा है, उस पर फ़र्क पड़ता है कि ऑनलाइन के भी प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं? ऑनलाइन का भी प्लेसमेंट इट्स वेरी गुड. दे एज आई सेड, when a company comes there, they don't see whether the student has done the course in online mode or physical mode as such. Okay, so they will see how the student is good or not. क्वालिटी देखते हैं. Quality देखते हैं, exactly. They will see the quality how the student is, right? So, and it is here I want to say that online courses of CDAC is not like any other courses which are run in self-paced courses है, YouTube का वीडियो है और many ऐसा platforms में जो चलता है, ऐसा नहीं है. This is live courses. Live courses in the sense students are sitting there with all videos on and everything. They are present, there are etiquettes to be followed, ये सब रहता है. And जो live चलता है, faculty पढ़ाते हैं and उसको भी monitor करने के लिए काफ़ी faculty रहता है. Okay. तो हर एक छोटा टीम में डिवाइड करके उनको मॉनिटर करवाता है, ध्यान रखा जाता है. फुल मेंटर्स होते हैं ऑनलाइन. मेंटर्स we have different types of mentors are there. Achha. Faculty mentors, alumni mentors, industry mentors, all these are there. Whether it is for physical or online, there is no difference in that way. They study physical batches में भी the students do very well, online में भी students बहुत अच्छा करता है, right? So that way there is absolutely no difference. Of course, time and again I am telling that सबसे important है बच्चे का डेडिकेशन, कितना लगड़ रहा है और तगड़ा प्रिपरेशन कर रहा है. सर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. वो है टॉप इंस्टीट्यूट्स. बच्चे जैसे ही आ गया भाई कि रैंक आ गई, अब कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है उसमें बहुत कंफ्यूज है. कहाँ से पूछ रहे भाई, ये लूँ वो लूँ. मेरे को भी बहुत मैसेजेस आते हैं और मैं सबको हर कोर्सेज के बारे में, मुझे हर इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो कैसी क्या चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को टॉप 5 बनाती हैं और बाकी इंस्टीट्यूट्स को कि हाँ ठीक है ये टॉप 5 में नहीं है? व्हाट मेक्स इज टॉप 5 इंस्टीट्यूट कौन से हैं और कैसे होता है वो डिसाइड? सी इन इंस्टीट्यूट बिकम्स टॉप में जो बनता है, देयर आर 2-3 थिंग्स इन दैट. वन इज दैट क्वालिटी ऑफ टीचिंग ओवर देयर एंड द क्वालिटी ऑफ ग्रूमिंग दैट दे आर डूइंग, राइट? तैयारी कितना करते हैं वो है. एंड देन अल्टीमेटली ये सब लीड करता है किधर, प्लेसमेंट में. ये चीज़ है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ जो करता है वो लोगों के पास कैसे पहुंचता है. दैट इन्फॉर्मेशन दैट वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स ऐसा करके वो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास कैसे आता है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कुछ सेंटर्स में जैसा है कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आता ही नहीं है, because they are may not be focusing on communicating to the public about it. PR अच्छा नहीं, PR नहीं होगा और publicity जो marketing and promotion नहीं कर रहा होगा उसके बारे में जैसा है. So some जैसा है कि मैं आपको पूछता हूँ, आप IIT बॉम्बे का कोई एडवर्टाइजमेंट देखा है? हाँ, वो एडमिशन ले लो करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी का देख रहा होगा. हाँ बहुत, राइट? लेकिन IIT बॉम्बे में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स जाते हैं, राइट? एंड जो है IIT बॉम्बे बन गया जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैज बिकम mostly because of the students who are coming there. With all due respect to the faculty, they also play a role in that. But the major part is played by the quality of the students reaching over there, right? So this is very important thing. The training part, when you see there, almost all the places it is similar in CDAC centers, authorized training centers. It is similar kind of मतलब पढ़ाया सब जगह सिलेबस सेम रहता है, सेम ही रहता है. टीचिंग क्वालिटी, teaching quality is also almost same. I will not say exactly the same, right? It is almost same only because there is a monitoring system that works in CDAC,
and we take auditing of the courses. We go to the centers and come discusses with the students how is the training conducted. This kind of things are also done. So they have to make sure that when things are done Quality maintained है. properly, right? एंड जो स्टूडेंट्स को है बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है कोई भी सेंटर पे हो, राइट? सो वी हैव अ सिस्टम लाइक 4 hours नॉर्मली ऑन एन एवरेज 4 hours थियरी प्लस 4 hours प्रैक्टिकल्स रहते हैं विथ फैकल्टी इन्वॉल्व इन दैट वन. एंड हम लोग बताते हैं उन लोगों को और 4 hours का सेल्फ स्टडी करना पड़ता है. तो व्हेन यू आर ए सीडैक स्टूडेंट आपको बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ता है. इट इज़ लाइक यू आर डूइंग ए वो काइंड ऑफ पेनेंस, लाइक तपस्या जो है वो करते हैं. 12 घंटे में इसका इन्वॉल्व होना चाहिए एंड इट्स अ मैटर ऑफ 6 months, राइट? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, जो सीडैक का ऑब्जेक्टिव है जो आता है, वी गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स. Okay. We get students from metros, cities, villages, and students कभी कभी आता है they have for the first time they've spoken English outside, right? तो वो भी आता है, लेकिन उनका सबको जाना का डेस्टिनेशन सेम ही है. Placements. हाँ, प्लेसमेंट है, कंपनीज है, IT कंपनीज है. सो वी हैव टू ग्रूम देम अ लॉट. तो हम लोग जो इनपुट आता है वो उधर से निकल के जो आउटपुट बन जाता है, तो 1.0 से हम लोग 2.0 बनाते हैं. तो उसमें बहुत सारा प्रिपरेशंस रहता है. स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो कभी कभी ये छूट जाता है. स्टूडेंट्स लगता है कि नहीं ठीक है हो जाएगा, ऐसा एटीट्यूड आता है. पर टॉप इंस्टीट्यूट्स में फीडबैक्स भी बच्चों के अच्छे के यहाँ पे, जो बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उधर स्टूडेंट्स को उतना कि अरे भैया मतलब ठीक ठीक है, वैसा ऐसा क्यों होता है? एक इसमें एक चीज़ है कि जो मैंने बोला है कि उसमें जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी इम्पोर्टेंट है जो है. एंड दूसरा चीज़ है स्टूडेंट्स जो है दे हैव टू सी दैट वेयर एवर दे आर स्टडिंग, दैट इज माई एडवाइस, they have to become a better version of themselves, much better version of themselves. जैसा है कि इंडस्ट्री में उनको ज्वाइन करना है एंड दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग एंड बी प्रोडक्टिव. जैसे सीडैक से जो कंपनीज लेते हैं उन लोगों को बेसिकली दे डोंट गिव मच ट्रेनिंग बिकॉज दिस इज लाइक वी आर लाइक ए फिनिशिंग स्कूल. तो 6 महीना हमारा इधर ये फिनिशिंग स्कूल का ही काम चल रहा है कि उनको इंडस्ट्री रेडी करता है. तो कंपनीज एक्सपेक्ट आवर स्टूडेंट्स टू वर्क फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स इन द प्रोजेक्ट. ओके, तो वो इंटेंशन में हम लोगों का उधर के लोगों को रिक्रूट करता है. प्लेसमेंट का टाइम कंपनीज इंस्टीट्यूट देखती है क्या? See, no company I have seen that when they are recruiting anybody just because they have done from a particular institute. अच्छा, उनको स्किलफुल बंदे चाहिए. पूरा उनको देखते हैं. They don't really see that this is studied from this so and so institute. They see that when you, like you, Sumer, you are a candidate going there, they will see how good you are. Okay. Are you fitting into my job profile? Okay. Right? How well are you fitting into? That's what they see. And if you are fitting into, you have studied from anywhere, they will recruit you. My next question is, जो मुझे बच्चे पूछते हैं कि सुमेर भाई अच्छी रैंक नहीं आई, 4000 रैंक है या उसके ऊपर है, मेरी क्या भाई इतना कम में तो अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिलेंगे, तो मत करो. तो व्हाट इज जॉनसन सर एडवाइस फॉर दिस? Okay. क्योंकि मेरे को जितना बाहर का नॉलेज था मेरे को अंदर का पता नहीं था. Actually, this is a very important, I think one of the most important question of the student. जैसा है कि हमारे इधर 12,000 लोग 15,000 लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सब लोग तो 500 के नीचे नहीं आएगा, 1000 के नीचे तो नहीं आएगा. सबको रेंज पे रैंक मिलेगा, राइट? तो वो रैंक जो ऊपर नीचे होता है, कभी कभी क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, उसमें से भी बहुत रैंक नीचे जाता है जितना स्टूडेंट्स है. एंड वी हैव टोटल इज ओनली 150 + 152 300 मार्क्स में A+B का जो अगर देखा जाएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स आता है. तो रैंक का बहुत डिफरेंस आता है, 1-2 आंसर का गलती है इसके वजह से. दैट इज़ नॉट समथिंग लाइक आपका ये पोटेंशियल कम है, ये नहीं है. दैट इज़ वन थिंग. एंड देन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लाइक somebody who has got 5,000 and above, right, whether they need to take admission or not, I would suggest is that one, if you have the will to continue in the next 6 months in a rigorous course, take up the admission. I have experience with, I have seen that in my own institute, the students who are at the lowest rank in CCAT, in that particular batch, becoming the topper in that batch. Right, so the further their performance during the course and also during the placement is not exactly dependent on CCAT rank. Okay, but CCAT rank is important in terms of you have an idea that you want to join in particular center. उसके लिए rank important है, तो उसमें अभी पढ़ना बहुत जरूरी है. इसमें
आगे जा जाते हैं, जब आप सीडैक ले रहे हो, हाँ, एक बड़ा फैक्टर होता है वो है फाइनेंशियल। या फाइनेंशियल में जो सवाल आता है मेरे को बच्चों से कि सुमेर भाई इसकी लाख रुपए के प्लस फीस है, इज देयर अ लोन फैसिलिटी अवेलेबल? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इज इट? loan facilities are there. हाउ So, टू गेट द प्रोसेस अबाउट इट, कैसे there are some portals are there. You can the candidates can see that like Vidya Lakshmi, this kind of. So there are some banks with which the particular center is having an agreement. Okay, so you can get in touch with these particular banks. Once you get the admission, the candidates can connect with that center, right? And go there and then talk to them, and that bank and the center can connect well and How then people facilitate to the same. सो हाउ पीपल विल कनेक्ट? पहले उन सेंटर में कॉल करके हम पूछ सकते कॉल हैं? करके बता सकते हैं हम लोग, एक लोन लेटर भी देते हैं सबको, so that they can show to the bank and mostly people get it. ओके, तो लोन का फैसिलिटी तो मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है मिलने के लिए। बट हाँ फैसिलिटी है अवेलेबल। हाँ फैसिलिटी है, बैंक के साथ हमारा टाई अप भी है, तो उन लोगों को मिल जाता है उसमें। सेकेंड क्वेश्चन मेरा था कि कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से आते हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं? CDAC, there is no discount on the fees or anything for any category or section or anything. CDAC के तरफ से नहीं है, but there are some scholarship facilities, sponsorship facilities available with the government. It is there, like government of Maharashtra is giving it. So there is one scheme called as Amrut scheme. Okay, AMRUT, Amrut. You can see the website and see that. उसमें क्या होता है कि जो है कि ओपन कैटेगरी का जो बच्चे हैं CDAC में एडमिशन लेने के बाद they have to pay the fees, okay, first, and एडमिशन लेने के बाद उसमें अप्लाई कर सकता है। तो ओपन कैटेगरी का around 20-25 communities are mentioned in that one, and they have to be EWS, economically weaker sections. Open category or EWS है, which communities mentioned in that their website. If you belong to that, they will get the full fee refunded. फुल फी मतलब इंक्लूडिंग GST। हाँ, सब कुछ मिलता है उनको। तो ऐसा है, इट मे टेक सम टाइम, they may ask you to complete certain part of the course, then only they will do it, right? वो एक स्कीम है। And there are another scheme which I know is BARTI, BARTI, that is बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है। उसमें से they give to the students in this, the previous one also, Amrit, what I said, you have to be a Maharashtra domicile. Okay, domicile of Maharashtra should be there. This also for Maharashtrians only, right? If you are belonging to the SC category, scheduled caste category, and you can get this scholarship, sponsorship from the BARTI. So पहले एडमिशन लेने का आपको ये फीस पे करने का, and then you can get this scholarship in that. There is one more course, sir. Thank you so much for letting people know. Many people don't know लोन का, स्कॉलरशिप का और ये जो है चीज़ें पता ही नहीं। एक और चीज़ है, मैंने रिसेंटली जब मैं जुहू आया था सेंटर में, तो मुझे पता चला, कुछ बच्चों से मिला, वो लोग HPC कर रहे थे। So CDAC provide a free 6-month course which nobody knows. So can you please tell us about CDAC, that course? What is HPC course? Okay. And how to get there and what are the process of it? That is HPC. HPC stands for High Performance Computing. Okay. Okay. So that course is offered under the National Supercomputing Mission. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशंस रहता है बहुत सारा, ये AI मिशन है, जैसा है कि नेशनल कंप्यूटिंग मिशन है, सो उसके अंडर आता है ये कोर्स। ओके, तो हमने जैसा कि एक आई थिंक 2-3 बैचेस चलाया है उसमें, सो सम कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स दिस कोर्स इज फ्री, not only free, that we can also get a stipend. Okay. तो लास्ट बैच ये चलाया है अगस्त में, it was run. So like girls it is free for and you get 10,000 stipend also, and the eligibility is like you need to be an engineering graduate or SC, that kind of thing is there, and then belonging to a SC category, EWS category also, you will get this free course with a stipend of 10,000 rupees you will get. This is run in August last year, but I don't know whether it will be run in the February. I don't think it is there. Maybe next August it may be there, but that is not yet declared. Okay, but right. There is something. That's a very specific course. Okay. To that. Is it for open category students? Maybe open category also may be allowed to attend, but they may not get the stipend. Okay, but they are given proper training like 6 months program. Only in that we do not provide officially the placement support. Like the training we are getting is training is very good.
right? Completely free, and some people are getting stipends also. Yeah, that is there. Okay. So now comes the one of the thing which people call is कि भाई 6 महीने का तो बहुत तगड़ी मेहनत है और मतलब it's very hectic to do CDAC for 6 months. Correct. Rigorous training होता है वो होता Yeah. है. What happened in those 6 months? Okay. Because from the outside I'm just seeing it कि हाँ CDAC कुछ है, मैं जाऊँगा करूँगा, बट अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता. मतलब क्या मॉड्यूल्स होते हैं, कोई आता है तो वो 6 महीने कैसे गुजरते हैं. What happened in exactly 6 months of CDAC? तो 6 months का जो कोर्स है, अगर आप यू आर एन एस्पायरिंग स्टूडेंट, यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन बिफोर दैट. ओके, तो CDAC का जो है कोर्स एक बार एडमिशन मिलने के बाद सेंटर्स में, जैसा कि आपका जो विश लिस्ट है ये सीजन में एडमिशन मिला, बात उधर खत्म नहीं होता है. Okay. बात उधर से एक्चुअली शुरू होता है. हाँ. राइट, बिकॉज दैट 6 months आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल. मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी, मुझे समझा वो चीज़. बहुत ये है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा जो चीज़ है, हम लोग उनके साथ चलते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. हम लोग ने क्या है कि सारे सेंटर्स में उनके, जैसे कि अभी आप फरवरी का हम लोग ने हर एक दिन क्या करने वाला है पूरा शेड्यूल बनाया है. मैंने खुद टीचर्स को भी देखा, वो लोग लगे हुए कुछ ना कुछ. आप देखो, जैसा कि फरवरी में कोर्स चालू है, यू आस्क मी अप्रैल 10th को क्या होने वाला है. ओके, वी हैव द डिटेल्स. अप्रैल 10th का 9 o'clock को क्या होने वाला है, 10 o'clock को क्या, शाम को 6 बजे क्या होने वाला, पूरा प्लानिंग हमने किया है. ओके, टिल द नेक्स्ट अगस्त पूरा प्रिपरेशन से. तो हम लोगों ने एक समझो बच्चा आ गया फरवरी वाले बैच में, उसके बाद क्या होता है, क्लासेस कौन से होते हैं, कैसे होता है. तो इट स्टार्ट्स, वी गिव, देयर आर 2 aspects they need to focus very much on. One is the technical aspect, other one is communication. Okay, so we take care of these 2 things through our courses, right? So grooming is what we do technically as well as soft skills side. The communication part, soft skill part is very, very important these days. Okay. Because you need to communicate with your client, so whether it is to get a project or the project presentation or whatever is there. So all these are there. Interview में तो prepare करना बहुत ज़रूरी रहता है. उसके लिए भी ये communication plays a huge role in that. तो starting from day 1, sometimes day 0 में भी शुरू करता है centers, तो preparation चालू होता है. ये प्रिपरेशन आगे तक लेके जाएगा, और 6 months को आपको दूसरा कोई भी चीज देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. बिकॉज फोन भी नहीं देख पाते, मैं सुना लो. फोन हम लोग तो जैसा है कि क्लासरूम में पकड़ के रखते हैं. हाँ, मैंने भी. तो यह शुरू आया 9 o'clock को आया, 9 o'clock मीन्स 9 o'clock, 1 मिनट भी लेट नहीं, हम लोग उधर खड़ा रहेगा. जैसा है ऑल सेंटर्स इट इज लाइक. एंड व्हेन यू कम देयर, फोन निकाल के रखता है. देन शाम को 6 बजे जब क्लास, ऑफिशियल क्लास खत्म हो जाता है, जैसा है कि 8 hours का सेशन खत्म हो जाता है, बट लंच के टाइम मिल जाता है फोन. लंच का टाइम में मिल जाता है. जैसा है कि इमरजेंसी में हम लोग कनेक्ट करवाते हैं हमारा सेंटर्स में, जैसा होता है. एंड देन हम लोग जैसा है कि थोड़ा टाइम ये करके दोबारा दे विल सिट एंड स्टडी, सेल्फ स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं. बहुत ज़रूरी है. एंड आजकल जैसा है कि वो सारे बैचेस का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, सो दे आर कनेक्टेड विद द फैकल्टी थ्रू आउट. जैसा है कि अभी जैसा है कि क्लास बोलो, जैसे उनको कुछ समझने का है ज़्यादा, तो दे आस्क द स्टूडेंट्स, द फैकल्टी अबाउट व्हाट दैट टॉपिक, फैकल्टी विल टेल, एंड एवरी फैकल्टी इज़ वेरी कोऑपरेटिव इन दैट वे. मैंने एक और चीज़ देखी, और मेरी एक मैम से बात हो रही थी, मैंने बताया कि बच्चे को जाके ऐसे ही नहीं कि अरे ठीक है प्रॉपर शेड्यूल फॉलो ना करे तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी बात बोली ना कि सुमेर 90% जो लोग आते हैं ना, वो ऐसी जगह से आते हैं कि उनको पता है मेरा उतना नहीं होने वाला, और वो लोग पैसे भर रहे हैं, बहुत मेहनत करके आ रहे हैं. सो दे आर डेडिकेटेड पीपल. वो ये 6 महीना रिगरस होता है, बट दे पुट द हार्ड वर्क, इसीलिए क्योंकि इसके बाद उनको जॉब चाहिए. दे आर इन द नीड, और नीड वाले जब लोग आते हैं ना तो सच में मेहनत करते हैं. तो वरना प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही थी, तो मुझे टीचर ने बोला कि अल्लाह, लोग ऐसा नहीं कि खरीद के प्रोजेक्ट दिखा देते, कि नहीं दिखाते, लोग सच में मेहनत करते, हम उनके साथ प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो एक 6 महीने के कोर्स में कितनी कितनी चीज़ें सिखा देते हैं हम लोग. मतलब बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी, अगर एक डैक ले लो, डीबीटी ले लो, तो कितने सब्जेक्ट्स कवर करते हैं हम ऐसा अंदाजे में. आप प्रोजेक्ट के बारे में जो बोला है ना, जो ऐसा है कि प्रोजेक्ट कोई इधर लाइक यू नो दे डू इट बाय देमसेल्फ, खरीदने का बात ही नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं चलता है. क्योंकि इसमें एक फ़र्क होता है. जैसे कि जैसे इंजीनियरिंग में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इंजीनियरिंग जब करता है, आपको सर्टिफिकेट मिलना. हाँ, बस राइट, पास हो जाए. हाँ, पास होना, फर्स्ट क्लास मिलना, डिस्टिंक्शन मिलना, वो है, दैट इज व्हाट. एंड देन जॉब कम्स एट द लेटर स्टेज ऑफ इट. ओके, लेकिन ये पहले ये इधर क्या है, सर्टिफिकेट, जस्ट फॉर द सर्टिफिकेट नोबडी डज द कोर्स.
people here 90, 95, 99% people do the course To for get a job. placements, हाँ. right? उसमें हम लोग सर्टिफिकेट जस्ट विद द सर्टिफिकेट ये दिखाएगा तो ऐसा जॉब नहीं मिलता है. सो यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग. तो प्रोजेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दैट. तो प्रोजेक्ट हम लोग डेडिकेटेड टाइम देते हैं उसके लिए, फाइनल प्रोजेक्ट के लिए. एंड मेनी ऑफ द मॉड्यूल्स, लॉन्गर मॉड्यूल्स हैव मिनी प्रोजेक्ट इन दैट. सो दे डू दैट बिकॉज और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहता है, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन रहता है. इंडस्ट्री लोगों को बुलाते हैं, इसमें कनेक्ट करवाते हैं, अलुमनी आते हैं, कनेक्ट करते हैं. सो देर आर सो मेनी थिंग्स इन विच दे आर ग्रूम्ड. ओके, इंडस्ट्री एक्सपोजर है. अब जो पूछ रहे हैं कि कितना, यू आर आस्किंग अबाउट हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर. देर आर मॉड्यूल्स अराउंड ऑन एन एवरेज 8 मॉड्यूल्स रहते हैं. एंड देन यू हैव एप्टीट्यूड विच इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट. ऐसा ही 10-11 मॉड्यूल्स रहते हैं. 6 मंथ में वो कंप्लीट 6 मंथ्स में कंप्लीट होता है. ऑन एन एवरेज ड्यूरेशन अगर लिया तो 2-3 वीक्स में एक मॉड्यूल खत्म हो जाता है. मैं सुना 4.5 मंथ में वो हो जाता है और उसके बाद कुछ और प्रिपरेशन की प्लेसमेंट का होता है. या ऑलमोस्ट लाइक 4.5 मंथ्स में थियरी सेशंस और प्रैक्टिकल सब खत्म हो जाता है. एंड देन यू हैव योर एग्जाम्स, सेंट्रलाइज्ड एग्जाम इज देयर. उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क इज देयर. 5.5 मंथ्स में कोर्स खत्म हो जाता है. Okay. And here also we follow the IIT system. Like IIT starts on a particular day, ends on a particular day. And उसके बीच में एग्जाम सब खत्म हो जाता है. तो उसका जैसा है कि कोर्स खत्म होके देन स्टडी होल डे, स्टूडेंट्स वेट फॉर द एग्जाम. से ये नहीं. तो 5.5 मंथ 24 वीक्स बोलते हैं. तो वो 24 वीक्स के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है. एक री एग्जाम भी होता है, सब कुछ खत्म होता है. एंड देन एक हफ्ते का गैप के बाद 26th वीक में प्लेसमेंट चालू होता है. ओके, इट इज लाइक दैट. सीसी एग्जाम्स जो था, अब तो एक मिड टर्म भी ला लिया है. पहले तो नॉर्मल लास्ट में सीसी ही था. उसमें कितनी इंपॉर्टेंट सीसी एग्जाम्स की होती है? पहले आप मुझे वो बता दीजिए कि कितना फ़र्क पड़ता है सीसी एग्ज़ाम के रिजल्ट पे. मैंने सुना है कि 70 या 75 लाओगे तो यू आर इन गुड कैटेगरी प्लेसमेंट के लिए. तो इज इट करेक्ट और वी रिक्वायर मोर और लेस? CC exam. So this exam where it is important, right? Because why it is important is that this is only centralized exam we are conducting it. So once the student joins a center, from the first module onwards, continuous exams होते हैं. So continuous exam में क्या होता है कि one is the like you may have assignments, then you may have a quiz, and you will definitely have lab exams. ओके, वो कंटिन्यूस चलते रहता है. वो कंटिन्यूस चलता रहता है. सो कोर्स मॉड्यूल एंड होने के बाद उसका मॉड्यूल एंड एग्जाम होता है. वो एक सेट है जो सेंटर पे करता है, जो इंस्टीट्यूट करता है, राइट, वेदर दे आर टेकिंग एडमिशन. एंड उसके बाद जैसा है कि पूरा कोर्स होने के बाद लाइक इन दी लास्ट मंथ सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स रहते हैं. हाँ, सेमेस्टर एग्जाम में आपको एक डिफरेंस है, उसके लिए स्टडी ब्रेक मिलता है. इधर ऐसा नहीं है कि यू मे हैव एग्जाम्स जस्ट 2-3 डेज, यू मे हैव क्लासेस जस्ट 2-3 डेज बिफोर एंड उसके बाद एग्जाम चालू होता है, राइट. सो दैट सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है सर. अभी उसको हमने फरवरी 2026 बैच ऑनवर्ड्स 2 पार्ट्स में किया है. अच्छा, वन इज दैट सेंट्रलाइज्ड मिड कोर्स इवैल्यूएशन है, okay, examination, and then you have centralized course and examinations. Okay, that is CC. So like 2 exams are there. 8 modules are so almost like 4 or 5 modules will be there in the half of the course. Will be there in the 3rd or 4th month में रहेगा. Other one will be there in the 5th month. Right? So this they are important, and these marks are the ones which we give it to the companies for they shortlisting the students. है कंपनी को हम CDAC का जो मार्कशीट भेजता है, ये CC का मार्क्स भेजता है. Okay. लोग उसको तो लोग जैसा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज CC मार्क्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग. ओके, शॉर्ट लिस्टिंग में बेसिस पे फिल्टरिंग करने के लिए. हाँ, फिल्टरिंग करने के लिए MCQ बेस्ड एग्जाम्स है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इट इज इम्पोर्टेंट इन दैट वे. बट देयर इज वन थिंग, सिलेक्शन जो होता है दैट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन योर दैट प्लेसमेंट प्रोसेस में जो परफॉर्मेंस है. ओके, सो आ जाते हैं सर फाइनल वाला सबसे जो बच्चों को क्वेश्चन होता है वो है प्लेसमेंट. या प्लेसमेंट द फर्स्ट गोल इज उनका, अगर CDAC कर रहे हैं तो कि प्लेसमेंट्स चाहिए, राइट. व्हाट इज एन एवरेज पैकेज स्टूडेंट गेट आफ्टर डूइंग CDAC? Okay, so there was a time after COVID, it was a boom, right? So it was in 21 and 2022, where almost all centers had got 100% placement. Okay. Right, and
2022 May batch, I would still remember that the one who graduated in 2022 May, within 1 month, almost all the centers got placed. Okay. Right? So there the average package was also high. We had packages like 20 lakhs and 15 lakhs. Everybody had increased their packages. Okay. That was there. And now also placement side it is good. Right? And I would say very good. And the packages are like, you can say something 6 to 8 lakhs packages are there on an average. But still we have some companies are giving 15 lakhs. Some odd companies are also giving around 20 lakhs also, some specializations. But average packages are 6 lakhs or 8 up to 6 to 8 lakhs, you can say. Okay, is the average package. 6 you can say, if you want to take exact figure, maybe that. 6 is the average package. Okay. But अभी क्या होता है कि एक जो आपने टाइम बताया ना सर, तभी नॉन आईटी वाले जो बच्चे थे वो भी सीडैक करते थे, ज़्यादा करके वो वाले होते थे. पर जैसे ही आईटी का बूम आया तो एकदम भाप लोगों ने सीएस इंजीनियरिंग करी. और अभी सीडैक में भी जितना मेरे को पता चला है कि 60% स्टूडेंट सीएस आईटी वाले, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर होती है. सो डज नाउ विद दोज पीपल इन कंपटीशन विद सीएस स्टूडेंट, क्या नॉन आईटी वालों को अभी भी जॉब मिलती है? मतलब द क्वेश्चन इज definitely yes. That is why we are making them eligible for the course, right? Okay. CDAC, if we are allowing them to be part of the course, that means there are options for them also. Okay. Right? As I said at the beginning of this shoot, is that we have many mechanical students, our toppers. Abhi bhi hai. People are getting job like. Yeah. They are good students, they are getting. We had one of the top students, she was from food technology. Okay. With a gap of around 8 years. She was a topper and she got the job. So it matters that how much preparation you are doing. Again and again I'm telling that. That is very important thing. Preparation matters. Yeah. CSIT walon, maybe they may be getting little more chances. Okay. Right? Because companies may be in their shortlisting criteria, they may be having the CSIT throughout first class, without gap. All these are there. So they may be getting more chances at the beginning. They are the cream part. We can say. In terms of selection criteria में yes, they may be the cream part. But interview में जब आते हो तो तुम्हें proper companies देखती है skills. Yeah. Your knowledge is what is checked. Right? The knowledge that we have and how you communicate your knowledge. Okay. 2 things are there. These are the only 2 things. That develops into confidence. That's so very important. जो अगला मेरा क्वेश्चन था वो था कि चलो ये तो मैं समझ में आ गया, कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसकी वजह से बच्चे की प्लेसमेंट अटकती है? यू हैव सीन सम पीपल कि यार इनमें ये गलतियां लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी प्लेसमेंट अटकती है कि यार ये नहीं हो पाते प्लीज. And it is definitely not the stream of engineering stream or anything. Okay. Engineering कोई भी हो, तुम बहुत अच्छा है तो प्लेसमेंट हो सकता है. You will have good chances. One is preparation में थोड़ा वो लोग लैग कर रहे हैं. What they will, the ones who I've seen that when most of the batches I've seen is that 2/3 of the students are placed. Okay. Right? कभी क्या होता है, अभी भी है, sometimes it goes up to 80%. हमने maybe 60 to 80% का जो range पे रहता है placements. This is also very good. Like on an average, if you take around 70%, that is 2/3 of the students are placed. अच्छा. So if you have a batch of 200 students, around that 250 students के आसपास place हो जाता है उसमें. So that is but you have to see that when you are in that top students who will get placed. That is important. You have to be hardworking. इसमें मैंने देखा है, with my experience, what I have seen is that the ones who are remaining unplaced, जब भी जैसा है कि requirements कम होता है companies का, तो उसमें क्या होता है कि they have lack of 2 aspects, 2 things. One is technical, they are lacking. The practical knowledge में जो है, they have been asked to do a coding or solve a problem or whatever is there, they are unable to do it, certain students. And second most important thing is that communication. बोल नहीं पाते. बोल नहीं पा रहा है कि that is what is. Is it English also matters? English is very important. अच्छा. Communication में जैसा कि interview में they say English only, right? So English communication is very important. So first is that you should know
technically, and second is that you should have good communication to communicate what you know. There is a quote of Naval Ravikant, learn to build technically, learn to sell to communicate. Correct, yeah. उसमें लोग सेल वाले में अटक जाते हैं. That is so we always tell the students that you have to express to impress. Yeah, obviously. A very important thing. And so during the course we give a lot of thrust on the communication aspect in that. Technical तो करना ही पड़ता है क्योंकि then only modules will be cleared and final exams will be cleared. So communication is one, is not exam के through evaluate नहीं करता है हम लोग जैसा कि. So but then this is evaluated by the companies very much. Okay. So उसमें थोड़ा रह जाता है. Communication की वो exam नहीं होती, but technically तो हम लोग हैं. Communication का भी evaluation होता है, but not like you know paper based exam नहीं. ये कितने मिनिमम कॉल्स जो होते हैं जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं, बोथ आईटी नॉन आईटी इररिस्पेक्टिव? मिनिमम कॉल्स का कुछ पहले ऐसा था कि 20 कॉल्स मिलते थे, ऐसा दैट इज मैक्सिमम. दैट इज मैक्सिमम. या ओके. मिनिमम का कोई गारंटी नहीं है. नहीं है. राइट. सो मैक्सिमम कॉल्स आर 20 नाउ. राइट. तो मैक्सिमम कॉल का मतलब क्या है? उन लोगों को जैसा है कि 20 चांस दिया आपको, 20 कंपनीज में चांस दिया. ठीक है. That's a big lot, right? 20 chances you are getting it. And if you are not still placed, you will be removed from the process. Okay. Okay, that is one thing. And अगर if you see that over the time, अभी लोगों को थोड़ा ये टेंशन है कि थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है कि ऐसा है करके, उसमें मुझे जो सबको बताना है, मैं I want to say that we have almost similar number of companies coming now also. हाँ, same type. Almost similar companies also, right? Those were coming before the so-called the slowdown, that is pre-2022. And अभी का जो है उसमें like number of company जितना पहले भी आता था अभी भी उतना ही आ रहा है, right? Most of the companies are also repeatedly coming, but ये चीज़ है कि उनका requirements may be little less now. और पैकेज भी थोड़ा कम कर रहे हैं. पैकेज उनको भी कॉस्ट कटिंग करना है. Yeah, not everybody is reduced. Some companies have reduced, but there are still some companies who have maintained that level. And उन लोग जितना पहले देता था वो भी अभी भी दे रहा है. ऐसा नहीं है कि कम किया है. लेकिन ये कि they have become choosy. Okay. That is important thing. Now they are not giving to everyone. Yeah. पहले तो क्या होता था 2022 का शुरुआत में they were after us. Students दे दो ये, and we did not have because एक महीने के अंदर almost everybody is placed. ऐसा. And it was like that. Placement officers were finding it difficult because we didn't have students, unplaced students. अभी क्या है कि उनके पास students base है करके they become choosy. तो but students are getting. ऐसा नहीं कि, as I said, 2/3 of the students are getting still placed. That I would consider is very good. What people ask, and I don't think it's a good question also. Okay. They want something कि मैंने कर लिया तो मेरे को गारंटी है. So is there a guarantee placement CDAC offer? No. Exactly no. Absolutely no. And nobody always. Nobody. And ऐसा नहीं है कि मैं CDAC का जो है स्टैम्प है वो हो गया तो मेरा प्लेस हो जाएगा. ऐसा भी नहीं है. नहीं है. Ultimately, you are the person who you are going to sell yourself. You have to prove yourself in the interview panel, and then only you will get the job. Zonal placement जो होते हैं और centers के जो placement होते हैं, क्या उससे matter करता है? Zonal placement is like, you know, our campus placements are run in 5 regions. Okay. Regional placement बोलते हैं हम लोग. उसमें जैसा है कि मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद एंड नोएडा 4 रीजियंस में है. ओके. इज कॉल्ड एज कॉमन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम, CCPP बोलते हैं इसको, बिकॉज वो जिधर है वो रीजन का अंडर जो आता है तो सब साथ में आके उन लोग ये दे अपीयर फॉर दी. Like for example, Mumbai में we have, as I said, 3 authorized private centers are there. CDAC's own center, Kharghar. Then we have students from Kolkata, Guwahati, and Trivandrum. All of them come to Mumbai, and we do the camp. Like you know, something college में you call it as pooled campus, right? तो उसमें ऐसा भेदभाव होता है कि अरे पहले यार वो सब तो ठीक है, खारघर में आ रहे या फिर कहीं आ रहे, तो मेरे बच्चों को पहले प्लेस करूंगा फिर बाद में होगा. No, that cannot be done. These are all completely monitored. Okay. Right? Yeah. So there are placement officers. वो placement officers के ऊपर chief placement officer रहता है, उसका ऊपर chairman रहता है, उसके ऊपर frontier academic council रहता है. So favoritism structure is that one. Favoritism नहीं कर सकते. And companies also जैसा है कि मेरा बच्चा है ले लो बोलेगा तो नहीं लेते. उनको क्या मतलब पड़ता है? They will see that the student is good or not, right? Then they will take it. That's all.
कौन से कोर्सेज की अभी जो प्लेसमेंट्स की डिमांड है, कौन से कोर्सेज के सबसे ज़्यादा बच्चे प्लेस्ड होते हैं? मतलब आपने जितना सुना है कि यार कंपनीज आती है, ये वाले जो रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। टॉप 3 कोर्सेज जैसे अगर आप कुछ बताओ तो, इफ यू डू नॉट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना है प्लेस होता है तो ऑब्वियसली इट विल बी द डैक कोर्स, बिकॉज यू हैव डैक में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, राइट? सो बट परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हैव सिमिलर परसेंटेजेस। ओके, मतलब क्योंकि वो बच्चे कम लेते हैं तो उनके हिसाब से परसेंटेज वो। Yeah. So like you have cyber forensic courses there, which is run only in one center, Trivandrum. That also has around 70 plus placement is there. That also, if you see average out across, it will be around 60 to 70 maybe there, right? Every batch, sometimes it goes up to 80. It is also there. Previously, as I said, it was 100% also. So all these courses are in demand. If you like, embedded systems, sometimes particular batches, it is very good. Maybe next batch it may be little less, but then again another batch it will pick up. It depends on the industry demand. Okay. VLSI, IT infrastructure, AI. So अभी तो बहुत। I have one more question. कैसा है पता है, मैं आपको बताता हूँ। जो बैचेस होते हैं, एक फरवरी का बैच होता है और एक अगस्त का बैच होता है। ऐसा माना जाता है कि फेब वाला जो बैच होता है वो सितंबर में ख़त्म होता है दिवाली के टाइम, तो उस टाइम क्या कंपनीज भी थोड़ा प्लेसमेंट तभी हायर नहीं करती, पर जो दूसरा वाला बैच होता है उसमें हायरिंग ज़्यादा होती है। सो इज इट, हाउ मच इट इज़ ट्रू? There is no correlation. No correlation. I would know the details better than anybody else, right? But are you sure? Yeah. So from my side, I'll tell there is no difference as such whether it is Feb batch or August batch. इसमें कुछ difference नहीं है. It's similar one only. Sometimes companies में particular companies आता है एक batch के लिए, their requirements are full. They may not come for the next batch. It can be August, it can be February also. There is no difference in that. It depends on the requirements in the industry. तो ऐसा नहीं होता कि जो अगले वाला बैच होता है अगस्त वाला उसमें ज़्यादा कंपनीज आती है? No. ऐसा प्लेसमेंट जो रेशियो है वो तो अभी नॉर्मली अगर एवरेज आउट करे तो सीडैक का प्लेसमेंट रेशियो 60-70% चल रहा है। 70%, 2/3 is, you can say that almost like that. So the last question which people ask me, 2022 में तो सीडैक obviously was a great go to thing. अभी कैसा है कि बच्चे थोड़े डाउट करते हैं, इज सीडैक वर्थ इट फॉर आईटी स्टूडेंट एंड नॉन आईटी आल्सो पीपल? अर्लियर फॉर नॉन आईटी सीडैक यूज्ड टू बी अ गॉड थिंग कि भाई ये कर लो तो मेरा कुछ हो जाएगा। अभी भी बहुत लोग करते हैं, मैं लोगों से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इज सीडैक वर्थ इट इन 2026? व्हाट्स योर आंसर? See, it is definitely worth it. Okay, I would say that the time that you are using, the way we have structured the course, the content of the course is continuously we revise the course with the demands of the industry. So there is definitely demand in the industry. As for that, we update the course, we prepare the students, right? So it is worth. And as I said, now we have almost 2/3 plus placement is there. So that is also really good, right? 70% तक है तो it is like that range on an average plus or minus 10% कुछ बैच में हो सकता है, but that is really good. It is worth. It is worth. So those who are waiting, I would say that one, apply for CCAT and take admissions in the immediate batch so that your gap will not increase and you have better. मेरे को ना एक मैं सर से बात कर रहा था तो मैंने बोला कि सीडैक नॉन आईटी के लिए वर्थ इट है क्या, तो उन्होंने बोला ऑप्शन बी क्या है। तो तब मुझे भी सोचने में आया क्योंकि क्रेडिबल अगर कुछ कोर्स है तो सीडैक ऑलमोस्ट कितने सालों से है वो सर, अगर आप देख रहे हो अभी 10 जगह ढूंढो, कुछ नई चीज़ें आ रही है तो ट्रस्ट करने को थोड़ा डर लगता है। पर सीडैक ने रिजल्ट्स दिए हैं लोगों को, मतलब बहुत पहले से वो आईटी की प्रिपरेशन कर, तो वो चीज़ भी मेरा एक था कि हाँ यार बात तो ये भी सही है कि ऑप्शन क्या भी, तो या दैट्स द। तो लाखों स्टूडेंट्स ने जो है हमने उनको करियर दिया है। सो इट इज़ लाइक इट इज़ द गवर्नमेंट्स मिशन। जैसा है कि हम लोग वो स्टूडेंट्स को जॉब देते हैं, जैसा है कि उन लोगों को कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट नहीं हुआ है, दे कम टू अस मोस्टली, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट। सो वी गिव देम द जॉब एंड थ्रू दैट देयर फैमिली इज अपलिफ्टेड, that community over there, that is uplifted, the entire village, and ultimately the national building is what we are doing, right?
So we are actually making the dreams come into reality for many of the families as well as their societies. एक और क्वेश्चन है कि आपके पास तो डेटा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, हर बैच में कितने लोग सीकैट एग्जामिनेशन की फॉर्म भरते हैं और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? जस्ट अ क्वेश्चन. It keeps on varying from batch to batch. Still एक एवरेज है. So but if you take it something like maybe around an average, you can say 15 to 20,000 candidates will be there applying, registering for CCAT. Okay, and appearing maybe little less, that is there, and then ranking is there. You again 10% you disqualify in that. We have close to 6,000 seats are there. अच्छा. Right, so there is a good chance that you can get admission in CCAT in any center, in like may not be that particular center you are looking for, but in one of the centers you can get it. There is a good chances there. So take up that particular center whatever you are getting. Okay. तो सर हम अभी एक रैपिड फायर करेंगे जिसमें आप क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको क्विकली आंसर देना है. Yes. पहला क्वेश्चन है कि मैं करंटली कहीं जॉब कर रहा हूँ, मेरा 3 to 4 LP का जॉब है, तो क्या मुझे सीडैक करना चाहिए? If you have a good stable job in the field you are working, right, you are that field is interesting to you, continue there. Okay. Do online CDAC program have same value or placement opportunity as offline program? Yes, surely there is no difference in that. Can students with backlog, gap year or below 60% marks still join CDAC and get placed? Yes, they can join. There is, except for the AA course which needs 60% and above. All other courses needs only less than 55 and above. They can join. They have to put a lot of effort to getting the dream job. In CDAC, which is better option? क्या CDAC करना चाहिए या 2 साल का MTech करना चाहिए? If you are looking for an immediate job, like for example 6 months का CDAC करके जॉब मिलना चाहता है तो then it is CDAC is a better option. अच्छा. But if you are more into going into research mode or learning more and more things over 2 years MTech, that is other. CDAC में क्या मैटर ज़्यादा करता है? स्किल्स मैटर करती हैं कि मार्क्स मैटर करते हैं? Definitely skills मैटर करता है क्योंकि जो इंटरव्यू में स्किल्स ही देखते हैं ज़्यादा. Can a student learn everything from scratch during CDAC from a non-IT perspective? For the courses which they are eligible, non-IT people, they can do it from scratch. The courses are designed in such a way that they can learn. Okay. If a student fail in internal exam या फिर CCE exams, so is their placement journey over? Those who are failing once, we'll give one more chance to them. There's a repeat examination. Okay. Right? If they fail in the second time, they will not be able to sit for the placements in that particular batch, but they will get one more chance in the next batch. Okay. What is the biggest misconception about CDAC? I would say that biggest misconception is that एक बार CDAC में join किया तो job पक्की होगी. That is not correct. Okay. Right? They have to put a lot of effort. Every student, then only you will get the job, the dream job you are aspiring to get. Okay. Is CDAC worth in 2026? Yes, very much. Right. If you have to give one line advice to CDAC aspirant जो सोच रहे हैं कि CDAC करना चाहिए कि नहीं, what would it be? They have to start preparing right now. Like today onwards, prepare with the ultimate dream, keeping it in mind. Which is placements. Which is placement for most of the students. Okay. Right? That was a great podcast. Thank you so much, sir, for answering all the questions and for inviting me. I had a very good experience talking to students, talking to teachers, seeing how things work. अब तक मैं बाहर से देख रहा था चीजें, but everybody is putting a lot of hard work. The students, the teacher, you. And I had a very great experience, sir. Thank you so much for that. Thank you so much. You have come to one center now. This is the same in almost all our centers. I would love to visit some more. And great talking to you. I really wanted, there are some misconceptions in the among the candidates, potential students about particular centers, particular courses, gaps and all those things. We have discussed about it. That's really good. I hope the candidates will know more about it through your channel and you are doing a great job. Thank you so much. Thank you, sir. Right.